Hello, students of class 8. How are you all, student? I am your science teacher, DPS sir, from Alpam Public School, Gola Bajar, Gorakhpur, student. Student, as you know, chapter 11, that is the force and pressure that I have explained in my previous video. That was the first lecture, revisional lecture, and today I am going to further explain the chapter force and pressure. In the previous chapter, I have explained you, student, about the force, what is force, or the types of forces, and let's proceed the chapter today further. So, student, a force can change the direction of a moving body. In my previous video, I have told you, student, that force can move a stationary object, force can stop a moving object, force can change the shape and size of an object, and today I am going to explain about the force can change the direction of a moving object. Student, you must have seen the gas filled balloon floating in the air, and suddenly it changes its direction due to wind. Suppose a gas filled balloon is left to released freely, but as soon as the pressure of air changes the direction of its movement of that balloon. In this example, we find the wind force is acting on the balloon which changes the direction of balloon. As the air moves in different direction, the balloon too changes the direction of its motion. In a cricket match, when a batsman hits the moving cricket ball, suppose the bowler has thrown the ball which is going towards the towards the batsman, but the batsman hits the ball and changes the direction of the ball of that moving ball which was coming towards him. That means by applying the force, the batsman has changed the direction of that ball which was coming towards near to him. So here you can see, student, by applying the force, he is changing the direction of that moving ball. This force applied by a batsman changes the direction of a moving cricket ball. Now, student, when we take a rebound in the game of carom, okay, the direction of the striker changes. In this case, the edge of the carom board exerts a force on the striker to change the direction. Thus, we can say that force can change the direction of a moving object. Okay, student? The force can change the direction of a moving object. Now, student, next, a force, by applying a force, we can change the dimension, or you can say shape or size of an object. Suppose that you are making a clay toy, okay, so by pressing it, you can change its various shape, okay, as well as its size. By pressing the lump of duff with your hand, just for example, suppose that if you're going to make a chapati, you have to make the duff by pressing with your hand, okay, make that flour, okay, knead that flour by pressing that it with the hand. So by pressing, so you, while kneading the flour, you can change the shape and size of that duff. By sitting on a bicycle, student, by sitting on a bicycle seat fitted with a spring, then by hanging the weight of a rubber band, if you on a rubber band, if you hang a weight, the rubber band will get stretched, its size and shape both will change. By putting the weight on a plastic scale placed between the two bricks, the plastic scale will
bend downwards, and this shows the change in shape. So student, what happens when a spring is stretched? When you hold the spring and you will try to pull from the both the side, both its ends, the string will stretched, which will show the change in shape and size. The length of spring is changed. Thus, the application of force has caused the spring to increase or decrease its length. इस प्रकार से स्प्रिंग के ऊपर दोनों तरफ से लगाया गया बल की वजह से वो स्प्रिंग जो है फैलने के कारण वो डिससेपेट हो जा रही है, उसका शेप और साइज चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से स्प्रिंग का साइज बदल जा रहा है। The force applied by the hammer on a small piece of aluminium has made it spread into a thin foil. अब एक एल्युमिनियम की फॉयल लेके उसके ऊपर आप कंटिन्यूस अगर हैमरिंग करते जाएंगे तो हैमरिंग करते करते वो एल्युमिनियम जो पीस होगा वो धीरे धीरे पतला होते चला जाएगा और वो लास्ट फाइनली एक पतला सा पेपर फॉयल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स बाय अप्लाइंग द फोर्स वी हैव चेंज the shape and size of that aluminum piece into aluminum foil. Similarly, student, the shapeless clay can be made into a beautiful statue by applying the force of fingers. Here you have also applied the force to change the shape and size. Now, student, the shape of a kneaded wet flour that is tough changes on pressing with a rolling pin. Okay, that is called the balan. To make it chapati, you change the shape of that. Okay, we apply some force when we press the duff with a balan rolling pin. Okay, thus force may be defined as a push or pull that changes or tries to change the state of rest or uniform motion of an object and to change its direction as well as to change its shape. Now student, different types of forces. Let's know about the different types of forces. Force can be classified as either a contact force or a non-contact force. So basically the force is divided into two groups, that is the contact force and other is the non-contact force. So student, let's talk about the contact force. Such force that will act only when we touches that object on which we are trying to see the change. मीन्स स्टूडेंट, जिस वस्तु में हम बदलाव देखना चाहते हैं, जिस वस्तु में हम बल के प्रभाव से बदलाव देखना चाहते हैं और बदलाव देखने के लिए उसमें हमें उसको कांटेक्ट में लाना होगा, उस वस्तु को अपने से कांटेक्ट में लाना होगा, अपने टच में लाना होगा। क्योंकि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो बगैर टच किए, बगैर कांटेक्ट में आए वो फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, वो फोर्स प्रयोग नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ फर्दर अबाउट द contact force. What is contact force? Let's see. Suppose student that you want to open the door of your room or close the door of your room. So for doing such action, opening or closing, मतलब खोलने के लिए या बंद करने के लिए, यह कार्य करने के लिए आखिर आपको अपने हाथों से उस दरवाजे को टच करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने हाथों का बल का प्रयोग तभी कर सकते हैं उस दरवाजे पे जब वह दरवाज़ा आपके संपर्क में, आपके नज़दीक में, आपके टच में आएगा, तभी उस दरवाजे पे आप द्वारा लगाए गए एक्शन का इफेक्ट यानी प्रभाव दिखेगा। तो इस प्रकार कुछ फोर्स केवल तभी एप्लीकेबल होते हैं, तभी उसके प्रयोग हो पाते हैं जब वह संपर्क में आता है। ओके, जब वो बल लगाने वाली बॉडी से, जिस बॉडी पे बल लगाया जाएगा, जब वो टच में आएगा तभी वो उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है।
ओके, उसे हम कहते हैं क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस दैट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट टच द ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा टू कॉज चेंज, जिसमें हम बदलाव देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आर द फोर्स विच इज यूज टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। जो बल हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू पुश, धकेलने के लिए या खींचने के लिए किसी वस्तु को, जो जिस फोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट लाइक अ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन और क्लोज। जैसे कि दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए, तो वो दरवाज़ा तभी खुल पाएगा या तभी बंद हो पाएगा, यानी वो डोर तभी एक्शन में आ पाएगा जब हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स उसके कांटेक्ट में आएंगे। अगर हम दूर से, दरवाजे के दूर से खड़े हो जाएं, तो क्या हमारे केवल चाहने से वो दरवाज़ा खुल जाएगा और बंद हो जाएगा? नहीं। जब तक हम वह एक्शन नहीं करें, खुद वो एक्शन नहीं करेंगे, उस दरवाजे को अपने हाथों से टच करके उसको पुल या पुश वाला फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो दरवाज़ा अपना एक्शन नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट, द फोर्स दैट अ पॉटर यूज टू टर्न द वेट क्ले टू पॉट। अब एक कुम्हार, मतलब एक बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के ऊपर जब तक वो अपने हाथों से फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, तब तक वो मिट्टी के सुंदर पॉट को, बर्तन को नहीं बना सकता है। उस डिसशेपेड मिट्टी को से एक बढ़िया सुंदर शेप का पॉट नहीं बना सकता है। यानी यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी फोर्स तभी एप्लीकेबल है जब हम उस मिट्टी को टच करेंगे तब। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ विंड यूज टू टर्न द ब्लेड। अब विंडमिल की, जो पंखे का जो ब्लेड होता है, हवा उसको तभी घुमा सकती है जब हवा उस पत्तियों को टच करेगी। जब वो पत्तियां हवा को टच करेंगी तभी वो पत्तियां मूव करना स्टार्ट होंगी, अदरवाइज वो वैसे ही एकदम स्टिल पड़ा रहेगा। अगर वो हवा उसको नहीं टच करेगा तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा उसमें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो बगैर संपर्क में आए उसके एक्शन, उसके इफेक्ट नज़र नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक के अंडर में, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में, तीन प्रकार के फोर्सेस आते हैं। वन इज द मैकेनिकल फोर्स, अदर इज द मस्कुलर फोर्स, एंड द थर्ड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। Again repeating, I am muscular force, mechanical force and frictional force. So let's start the topic first about the muscular force. आइए हम muscular force के बारे में पहले पढ़ते हैं। The force exert by muscles। अगर शरीर के मांसपेशियों द्वारा, चाहे वो जानवर का शरीर की मांसपेशी हो, चाहे वो किसी बच्चे का, चाहे किसी बूढ़े का, चाहे किसी व्यक्ति का शरीर के द्वारा लगाई गई, उसकी बॉडी के मस्कुलर फोर्स से लगाई गई कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लगाई गई फोर्स है जिससे वह वर्क होते हुए दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स वहाँ पे काम कर रहा है। जैसे कि एक कार्ट को एक बुलक कार्ट को एक यू कैन से बफेलो या ऑक्स खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो वहाँ उस ऑक्स या उस बफेलो का मस्कुलर पावर है जो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उस कार्ट को पुल करने में। सो स्टूडेंट, मस्कुलर फोर्स के बारे में बता रहे हैं। द फोर्स exerted by the muscles of the body is muscular force. For example, you lift your school bag. Here you are applying, a boy while lifting the school bag is applying a muscular force. तो स्टूडेंट, आप जब स्कूल आते वक्त स्कूल के बैग को अपने कंधे पे टांगते हो, तो क्या बगैर इसको टच किए वो आप स्कूल ले आ पाओगे बैग को? नहीं। उसके लिए आप अपने मस्कुलर बॉडी का मस्कुलर पावर इस्तेमाल करके, फोर्स इस्तेमाल करके उसको आपने अपनी पीठ पे रखा और फिर उसको आप स्कूल तक ले आए। यानी ये एक्शन तभी हो पाया, बैग को स्कूल लाने तक का एक्शन तभी हो पाया जब आपके बॉडी द्वारा लगाया गया फोर्स से आपने उस बैग को उठाया और अपने बैग पे उसको रखा। सेम वे, a bullock pulls plow the field. Here also the bullock is applying a muscular force.
The muscular force enables us to perform various activities involving movement or bending of our body. The muscular force enables us to perform muscular force की हेल्प से बहुत से काम ऐसे होते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग, जो बहुत से ऐसे वर्क ऐसे हैं जो बगैर मस्कुलर फोर्स से हो नहीं पाते हैं। और मस्कुलर फोर्स तभी एप्लीकेबल है, तभी वर्क करेगा, उसका इफेक्ट्स तभी दिखेगा जब when the body on which the force is to be applied when come in contact to that body who is applying the force. It also act inside our body to perform movement or bending. कुछ फोर्स हमारे बॉडी में भी हम लगाते हैं झुकने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए. It also acts inside our body to perform functions which are required for our survival. In the process of digestion, now in the process of digestion, the food is pushed through the alimentary canal due to the action of muscular force called the expansion and contraction, that is called. Okay, so same way the food that we eat goes through our alimentary canal. Okay, when the alimentary canal contracts and expand, so while doing so they creating a force to on the food so that the food could move downward to the stomach. Okay, so now we will inhale. Now suppose we inhale and exhale the air. We inhale and exhale the air during breathing. Here also a muscular force is applied for throwing out the carbon dioxide and pulling the oxygen inside. The blood also get pushed into our arteries by a muscular force that is exerted by our heart. So here also you can see, student, outside the world as well inside the body also there is applicable application of the muscular force which is comes under the contact force. Now student, next come the mechanical force. This is also example of contact force. Okay, this is also an example of contact force, mechanical force, the force produced by a machine. Okay, if any work is being done by a machine, suppose that you are plowing your field by the help of a tractor. That means the tractor, by the application of its cultivator, it's plowing your field. So here a machine is applying the force, and it could only possible to apply when it comes under contact. Okay, so it is called the mechanical force. Machine does not produce force on its own. We must supply it with some kind of energy to produce force. The energy of petrol is used to produce force, which is used to run a motor car engine. The energy of petrol, again student, the energy of petrol, okay, is used to produce the force which is used to run a motor car engine. So in motor car petrol is used to run that motor car. So here also the force that is produced after the burning of the petrol is helping the motor car engines to work. Energy of moving air, that is wind, moving air is called wind, it is used to produce the force that rotates the turbine of the grinding wheat in a windmill. When that blade moves by the help of the wind, and that turbine will only move when the blade will move, and the blade will move only when the wind touches that wind blade, that windmill blade, and put force on it to move it. So you can also see here, when the air is coming in contact with that blade, then only the blade is moving, and then only this type of power is being created to move the turbine and the floor to wind the wheat. Flowing of water has a kinetic energy, means that this energy is used to produce necessary force which runs the electric generator. The water that is falling from great height, that has got huge energy, and this huge energy is used to generate electricity current. So student, till now I have explained you about the muscular force and the mechanical force.
These both two forces are the examples of contact force. Now the last is the frictional force, which is the last topic of the contact force. Student, what is frictional force? A force which acts when two bodies comes in contact with each other, and when one body moves on another, then between two outer surface of these two bodies when came in contact, between them there a force is applied to stop that moving body, and that force is called the frictional force. Suppose that student, you are driving, you are just like cycling, doing cycling, and immediately you applies the brake and the cycle stops at that moment after applying the brake. How it is so? The tire grip, which was creating friction, which was creating a force, and as well as the road on which the cycle was moving. So the upper surface of the road and the outer surface of the tire both contain friction in them, and when the force was applied by the cycle, these two friction when came in contact create such a force to stop that moving body. This force could only be activated when both the surface will come in contact. जब तक दोनों अलग अलग वस्तुओं की सतह आपस में जुड़ेगी नहीं, आपस में नज़दीक में नहीं आएगी, तब तक ये फोर्स एक्ट नहीं होगा, तक तब तक ये फोर्स वर्क में नहीं आएगा. दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स is also a force that will only be applicable when the two objects will come in contact with each other. So student, the frictional force acts between two surfaces on which one is moving over the other. So there are chance of slipping. अगर ये friction force नहीं होता तो अगर आप खड़े होते तो तुरंत स्लिप कर जाते, पर आपके पैर के, अगर आपने जूता पहना है या आपने स्लीपर पहना, तो पैर के जूते या स्लीपर के तलवे के नीचे जो रफनेस बनाई जाती है कंपनी द्वारा, जूते या चप्पल कंपनी द्वारा, और फर्श पे जो रफनेस है, ये दोनों रफनेस जब आपस में मिल रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो दोनों फ्रिक्शन की वजह से वो एक रफ सरफेस क्रिएट है जो है दोनों सरफेस के नीचे, वो स्लिप होने से रोकने का प्रयास कर रहा है, और वहाँ पे एक फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है जिसे कहते हैं क्या? फ्रिक्शनल फोर्स. सो इस प्रकार स्टूडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ contact force. Meet you in the next video student for explaining the topic non-contact force. Till then, thank you student, have a nice day.